Can you hear my voice, Monish bhai? Manish, can you hear my voice? Okay, I got few chat disabled. Okay, I see. The chat has been disabled. Okay, thank you so much for letting me know, Mr. Ram Narayan. I have enabled the check for everyone. If you can hear my voice, can you give me a quick check? Manish, if you can open your mic and you can open your camera. Okay, thank you so much, Abhishek. Okay, Manish, are you there? Okay, Manish, if you can hear my voice, can you give me a quick check? Yes, I Manish, can hear your voice. Is my voice clear? absolutely loud and clear. I think, Manish, we can start the program. But Okay. before I start, very quickly, I would like to read out a disclaimer. Okay. So investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Representations are not indicative of future results. All discussions are purely educational in nature and are in no way an advice or recommendation. Now, having said that, please understand that this is an educational program. We might be discussing indices, we might be discussing about stocks, the technical status, but please understand that this is not a recommendation, right? So it's very important. And today, of course, the topic of discussion is technical analysis simplified. And I request all the participants to feel free, ask questions, interact as much as possible. And Manish would like to explain with demonstration, with practical example as much as possible, right? So let's have a great interactive learning session today. With that, I'd like to invite Manish to start the program. Manish, if you can take it over. Yeah. Good evening, everyone, and welcome to today's session on price action, technical analysis, and all that mumbo jumbo that you see uh, and hear. Uh, so basically, when we look at price as a data point, okay. Now, uh, let's put it this way: that uh, what options do we have? What choices do we have when we talk about trying to predict or trying to anticipate where the price is going? Okay. Now, obviously, the first one is looking at fundamentals, which essentially is a relatively longer term play. Uh, you look at uh, various parameters, अलग अलग parameters देखते हैं ना हम, earnings देखते हैं, results क्या है क्या नहीं है, and so on and so forth. And then we try to extrapolate that those results. We try to make sense out of uh, what the data is, and try to put things in perspective and try to figure out uh, uh, where the price is likely to go. Now, this is true whether you are looking at any particular price series. See, basically, when you look at a price series of any asset class, whether it is gold, whether it is oil, whether it is individual stocks, indices, or whatever, uh,
what we are trying to find out, I mean, what technical analysis does is that it will help you to isolate those प्राइस सीरीज, मतलब वो एक प्राइस सीरीज को अलग कर देगा, one which gives you a relatively high probability. Okay, so that means if I'm looking at several charts right now, let's say I'm just running through several charts, there is no uh, okay. Now I'm looking at several stocks, right? Let's say for I'm looking at several stocks. Now out of this 130, 140 odd, which particular stock और rather a finite group of stocks, देखिए ऐसा कोई भी एक स्टॉक या कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो मैं देख सकता हूँ और जिसपे मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, वेदर इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, वेदर इट इज फॉर शॉर्ट टर्म और वट एवर, तो क्या मैं किसी एक ट्रेड या इस पे मैं किस पे ट्रेड लूँ राइट नाउ। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, जैसे ही इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, तो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड कि कल के दिन में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं कौन से स्टॉक पे बाय करूं, कौन से स्टॉक पे सेल करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऑब्वियस थिंग वन इज प्रोबेबली लुक एट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो इसके बारे में हमने कल भी बात किया था कि जब भी कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो एक्सचेंज में उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। अ, तो एक वो हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इतने कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं कि हमें ये एक एक कंफ्यूजन रहता है हमारे जहन में कि मैं कौन सा स्टॉक में ट्रेड लूँ, किस तरीके से ट्रेड लूँ, मैं इसको कैसे रन करूँ, क्या मैं इसको मैं 5% के लिए रन करूँ, मैं 10% के लिए रन करूँ, तो मैं कैसे इसको इसमें एक ट्रेड या एक ट्रेडिंग पोजीशन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को या प्राइस एक्शन सीरीज। सो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग, अगर हम डिफाइन करते हैं, अगर हम एक शब्दों में इसका वर्णन करते हैं, फिर व्हाट इज technical analysis. So basically, when we talk about technical analysis, okay, so it is a study employed to evaluate investments and identify trading opportunities. देखिए मैंने आपको क्या कहा था, identify trading opportunities, evaluate investments, okay, assuming fundamentals कोई भी दो सिक्योरिटी के सेम है, सिमिलर है, तो दोनों में से मैं किसको लूं। अगर मेरे पास 10 स्टॉक है जिसके फंडामेंटल सिमिलर है, रिलेटिवली इक्वल है, तो मैं किसमें ट्रेड लूं। ओके, बाय एनालाइजिंग स्टैटिस्टिकल ट्रेंड। स्टैटिस्टिकल ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ओवरऑल प्राइस मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अब मैं शायद एक साल का प्राइस मूवमेंट स्टडी कर सकता हूँ, 6 महीने का स्टडी कर सकता हूँ, मैं 5 साल का स्टडी कर सकता हूँ। ओके, गैदर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी। देखो ट्रेडिंग एक्टिविटी में से जो प्राइस मूवमेंट निकलता है, तो उससे मैं एनालिसिस करके मैं अपना एक स्ट्रैटेजी, एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि शायद लेट्स से फॉर एग्जांपल अडानी एंटरप्राइजेस मे और मे नॉट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एट दिस करंट लेवल, राइट। तो लेट्स से मेरे आंख के सामने स्क्रीन पे है अडानी एंटरप्राइज, तो मुझे ये शायद अभी मुझे लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि शायद ये रेजिस्टेंस पे है या एक सपोर्ट पे है, या तो फिर प्राइसेस में यहाँ पर कुछ होता है। और अगर इसको मैं अपने एक ऑब्जर्वेशन लिस्ट पे रखता हूँ, मैं अगर इसको 2610 2615 के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं इसमें बाय कर सकता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लेट्स से 2450। व्हाई, बिकॉज इट बिकम्स अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो हम प्रोबेबिलिटीज ट्रेड करते हैं, वी आर नॉट ट्रेडिंग सर्टनटीज। ओके,
प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज नॉट 70-80%, लाइक काफी लोग कहते हैं कि 90% सक्सेस रेशियो, 80% सक्सेस रेशियो। इट इज पॉसिबल ओनली अंडर सर्टन मार्केट सिनेरियो, हर बार नहीं होता। यूजुअली यू आर राइट मे बी 50, 60, 65% ऑफ द टाइम। Most trend following guys, they are right only about 30% of the time. तो हाई प्रोबेबिलिटी देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एंड हाई प्रोबेबिलिटीज दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है। तो हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं स्पेसिफिक कंडीशंस आइडेंटिफाई करता हूं और अगर मैं सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेड्स लेता हूं, तो ओवर अ लार्ज सैंपल साइज मतलब ओवर सेवरल ट्रेड्स, यूजुअली 30 ट्रेड्स, अगर आप कोई एक स्ट्रैटेजी लेते हो तो ट्राई टू मेजर योर परफॉर्मेंस ओवर 20 or 30 ट्रेड्स। ओके, इंडिविजुअल ट्रेड मे गो विथ यू, दे मे गो अगेंस्ट यू, दैट इज इररिलेवेंट। what matters is your performance over a large sample size। यूजुअली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 30 होना चाहिए। ये कुछ समय पहले की बात है, रादर ओल्ड कॉन्सेप्ट, बट नया कॉन्सेप्ट ये है कि एटलीस्ट ओवर 20 ट्रेड्स यू नीड टू मेजर योर परफॉर्मेंस। ओके, तो ओके, नाउ द पॉइंट इज कि ये प्राइस सीरीज ये कौन क्रिएट करता है, हु क्रिएट्स दिस प्राइस सीरीज? सी, इट इज ट्रेडर्स अल्टीमेटली। इसका प्राइस अगर अडानी एंटरप्राइज फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो 3600 ऑड लेवल से ये नीचे आया, क्यों नीचे आया? मेन का हिंडनबर्ग का इश्यूज एंड वॉट एवर रीजन, इस पे प्राइस नीचे आया, देन यू सी दैट इट इज बाउंसिंग ऑफ। तो यहाँ पर जब भी हम एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हम अप्लाई करते हैं, तो हमें एक रीजनेबल कंक्लूजन आ जाता है कि शायद अगर मैं इसको इस तरह से ट्रेड करूं, जैसे कि इसको मैं अगर 26,000 2650 के ऊपर अगर ये जाता है, मैं इसे ट्रेड करता हूं, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि यहाँ से प्राइस मे बी 3000 तक जाएगा या 3200 तक जाएगा। इसके लिए शायद थोड़ा समय लग सकता है, बट आई मे हैव टू वेट फॉर इट। ओके, नाउ व्हाट रियली हैपेंस इन द मार्केट इज, और ये बहुत सालों से हो रहा है, मतलब ये नई बात नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस एज अ सब्जेक्ट इज वेरी ओल्ड, मोर देन 150 ईयर old study। It has been refined over many decades by various people, जिसने ये सब्जेक्ट को स्टडी किया है, इन पे बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी गई है। तो अभी इसमें क्या होता है कि देखिए, टेक्नोलॉजी काफी चेंज हुई है लास्ट 20 सालों में। अगर 20 सालों में देखो, टेक्नोलॉजी काफी चेंज हुई है, या शायद इवन 30 ईयर्स हो गए। बट व्हाट हैज नॉट चेंज इज द ह्यूमन बिहेवियर। ओके, वही ह्यूमन बिहेवियर जहां पर एक जब भी प्राइस में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, तो तो एक ग्रीड हो जाती है। तो हम कहते हैं ना, स्टेजेस जो होता है कि स्टेज ऑफ ग्रीड होता है, ग्रीड के बाद प्राइसेस जब भी आता है तो डिस्पेयर है कि अभी तो मार्केट बहुत नीचे जाएगा यहाँ से, जैसे कि निफ्टी में हुआ था अ, कुछ समय पहले कि इन सितंबर अक्टूबर, जहाँ पे मार्केट काफी नीचे आ गया था। तो बेसिकली व्हाट हैज नॉट चेंज, ओके, व्हाट हैज नॉट चेंज इन दिस period is human nature। Okay, fundamentals keep on shifting from one sector to another sector and so on। So price action, okay, it's a study employed to evaluate investments, okay, and identify trading opportunities। देखिए, काफी लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए है। तो स्विंग ट्रेड, विल टॉक अबाउट दिस टर्म्स। तो एसेंशियली it can be now biggest advantage of technical analysis, it can be used on all time frames। why do we say on all time frames? Because demand and supply of any price series is present on all time frames। देखिए, मार्केट में अलग अलग टाइप्स के प्लेयर्स होते हैं, राइट? So some people are long term institutional investors, some people are short term traders, then there is always a continuous series। So डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम दैट यू आर लुकिंग, क्या आप 5 मिनट का चार्ट देखते हो या तो फिर वीकली चार्ट देखते हो, तो कोई भी टाइम फ्रेम में
जो आप देखते हो उसमें सिमिलर पैटर्न्स रिपीट होती है. सो एसेंशियली टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज रेपिटेटिव मूवमेंट्स, और इस रेपिटेटिव मूवमेंट में हम ये देखते हैं कि काफी बार जब भी प्राइस एक जोन पे आता है, ओके, सिमिलर थिंग कि जब प्राइस एक जोन में आता है तो वहां पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है कि जहां से एटलीस्ट प्राइस एक बाउंस कर सकता है, या तो फिर एक प्राइस लेवल के ऊपर जाता है तो प्राइस में एक बहुत शार्प मूवमेंट आता है. सो जब भी आप प्राइस मूवमेंट आप फॉलो करते हो, थिंग्स विल नेचुरली बिकम क्लियरर टू यू. So this is the reason why we use technical analysis. Why? Because it इट इज अ साइंस ऑफ रेपिटेटिव मूवमेंट. जो रेपिटेटिव मूवमेंट बार बार होते हैं उसका साइंस है टेक्निकल एनालिसिस. सो अभी मुझे तो बहुत 20-25 साल हो गए प्राइस एक्शन स्टडी करते करते, टेक्निकल एनालिसिस करते करते. सो नाउ एटलीस्ट नाउ आई नो दैट अच्छा क्या इसमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड somebody as a professional research provider, every day morning I go through that प्रोसेस की आज क्या मार्केट में हो सकता है, आज कौन से स्टॉक्स मूव करने वाले हैं, मैं किसमें ट्रेड दे सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो I use technical analysis as a supportive tool. I probably it's a very important tool for me, and it can be learned. It's a very vast subject, and मैं काफी सारे clarifications ये सेशन में आपको दूंगा कि patterns क्या है, so on and so forth. तो आज के सेशन में जब भी हम देखेंगे तो हम बात करेंगे टेनेट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड ट्रेंड डायनामिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेंड किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड. ओके, तो हम इस बारे में बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट टेनेट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की. टेक्निकल एनालिसिस के टेनेट्स इंपॉर्टेंट क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स. देन वील गो ऑन टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगेन ये एग्जॉस्टिव नहीं है. दिस इज a very brief overview of what is there to learn. There are indicators, moving averages, चार्ट पैटर्न्स, एलियट वेव पैटर्न्स, हार्मोनिक पैटर्न, बहुत सारी पैटर्न होती है. व्हाट दे टेल यू इज दैट इट इज इट इज अ टेस्टिमनी. ये एक प्रूफ है कि ह्यूमन बिहेवियर इज रेपिटेटिव, और इस रेपिटेटिव मूवमेंट को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं क्या, ताकि हमें ट्रेडिंग में, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स में, हमें हमारे अ, अ, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हमने सिलेक्ट किया है तो हम उसमें कामयाब रहे, हमें इससे सक्सेस मिले टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. Okay, so now what we start is basic of basic tenets of technical analysis. किसको कहते हैं, what is meant by basics of technical analysis book. ये देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब भी आप स्टडी करते हो, okay, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो उसमें आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, मेडिकल साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट. तो एक बेसिक टेनेट्स होते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट tenet is that prices move in trends. Okay, तो ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, अप, डाउन एंड साइडवेज. विल टॉक मोर अबाउट दिस टाइप ऑफ ट्रेंड. तो प्राइसेस में अगर एक बार कोई ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है, अगर प्राइस में कोई ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है तो उस ट्रेंड तक, उस ट्रेंड में प्राइसेस काफी समय तक रह सकते हैं. Okay, we'll talk about this principle of trend tenacity when we go more into detail about trends. तो प्राइसेस मूव इन ट्रेंड मतलब एक बार आपका ट्रेंड एक दिशा में, एक ट्रेंड ने एक दिशा पकड़ ली तो काफी समय तक ट्रेंड उसी डायरेक्शन में हो सकता है. मतलब अप ट्रेंड में अगर है तो अप ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वो रिवर्स नहीं होता. ओके, सो दैट इज द रीजन वाई जब भी हम कोई ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ते हैं तो यही एक उम्मीद रहती है कि इसका ट्रेंड आगे जाके कंटिन्यू हो सकता है. या तो अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है देन वी वेट फॉर सर्टन confirmation before deciding that this trend is it is likely to change, or whether this trend is likely to continue. Okay, so prices move in trends.
उसके बाद आता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। देखिए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ मतलब अ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको हर बार एग्जैक्ट सेम प्राइस मूवमेंट मिलेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल let us look at nifty. I'll explain this concept to you when we talk about when once we are looking at nifty, right? So I'll just load this chart of nifty, and so I'll just load this chart of nifty. Now uh, now just for the time being, focus on price move from this point to this point, from let's say from this point to this point, and finally from this point to this point. ठीक है? See, देखो ये सिनेरियो में मे बी शायद we can also look at this point to this. Okay. So now what you see, if you overlay some indicators on this, you will find similar readings. See why? Because prices they are in a strongly trending market. देखो ये phase में prices are in a strongly trending market. So once you find prices are in this fashion, uh, you can decide on the trading strategy based on what the price movements are showing. Okay. Now, if I go back and ask you, can you identify कि ये current movement जो है, it is similar to which stage? Is it here or is it here or is it more of this fashion? Okay. See, this is an example of prices in a range. Okay. Okay. This is an example of prices in a range. This is an example of prices in a range. ठीक है? तो अभी हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड लास्ट एक डेढ़ महीना का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो ये एक रेंज में है। देखिए कल जिसने अटेंड किया था, मैंने आई व्हाट आई टोल्ड यू कि एक 24,800 पर सपोर्ट है, इफ यू रिमेंबर। जो भी कल जिसने ये सेशन अटेंड किया था, यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, I said that around 2400 पे एक सपोर्ट जोन है। Now what does price need to do? Okay, most likely, if you want to get a big move, prices have to go beyond this range. Will it go? I don't know, but it's a high probability situation. हाँ, ये आज नहीं तो कुछ समय के बाद कभी भी ये जा सकता है, and whenever it happens, I can expect the prices to move higher. And by the way, this is a rectangle. We'll talk about this pattern at some point later in the program. So now, what I know is that अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, then it is likely to go up. So now what do I do? ये देखो, ये मेरे पास ये इंफॉर्मेशन, मेरे एनालिसिस की ये इंफॉर्मेशन है, राइट? सो प्राइसेस मूव इन ट्रेंड। सो नाउ एक इसमें एक इश्यू क्या आ सकता है, इसमें इश्यू ये आ सकता है कि काफी समय तक, बिकॉज द करंट ट्रेंड इज साइडवेज, it can remain in this range. Okay? It can remain in this range. So now what do I need to do? If I am going to buy here, I have to give myself a lot of time. I am anticipating that eventually the markets will move above 25 200 and they will go higher. That is what my anticipation is. Okay. Now what if I am wrong? Okay. What happens if I am what happens if I am wrong? Okay. And at what price level do I decide? देखिए फंडामेंटल में क्या है दैट वी डोंट नो। देखिए कल न्यूज़पेपर में क्या छपने वाला है मंडे को, दैट वी डोंट नो। ट्यूसडे को क्या आने वाला है, वी डोंट नो। ओके, बट
what I can decide is that agar price, if it starts to trade below 25 200, 25 300, then first thing that I know is that I am on the wrong side of the market. या तो फिर मेरा एंटिसिपेशन गलत हो गया. देखो मेरी एनालिसिस सही थी. देखो मैं जो मेरी सोच में भी शायद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरी सोच सही हो जाएगी. अगर मार्केट रिवर्स आता है तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि अगर ये 24,300 के नीचे जाता है देन वी माइट सी लोअर लेवल्स टू 23,700 एंड व्हाटएवर. तो नाउ आई नीड टू गेट आउट. तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट मंदी की तरफ हो आ रहा है देन आई नीड टू गेट आउट ऑफ माय लॉन्ग ट्रेड. जहां पर अगर मैंने तेजी की है तो उसमें मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा. ओके. देखिए एनालिसिस आपकी सही हो लेकिन मार्केट कंडीशंस में रिवर्स विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. हमारे कंट्रोल में है नहीं है. हमारे कंट्रोल में है कि कोई कहीं पर वॉर शुरू हो गया या तो फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज में अगर सरकार ने कुछ अनाउंस कर लिया. समथिंग कैन गो रॉन्ग. प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया. तो क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं. तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है हमारी प्रिपरेशन, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा ट्रेड मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग. दैट इज इन आवर कंट्रोल. ओके. नोबडी कैन कंट्रोल व्हाट द इकोनॉमिक पॉलिसीज आर गोइंग टू बी. क्या पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो सकता है. दैट इट इज नॉट इन आवर हैंड्स. इन आवर हैंड्स इज जस्ट इफ मार्केट डज दिस आई एम गोइंग टू डू दिस. अगर मार्केट ये करता है तो मैं ये करूंगा. अगर ऐसा मार्केट नहीं होता है और मार्केट मेरी एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है उसका मतलब क्या है कि मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग टू माई थिंकिंग. तो मुझे जो लगता है मार्केट वो रिएक्ट नहीं करता है. आपको क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट है. राइट. टीवी वाले क्या कहते हैं, फिन इन्फ्लुएंसर क्या कहते हैं, बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस का क्या सोच है वो छोड़ दो. व्हाट प्राइस लेवल्स आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व एंड ट्रेड एंड आप कैसे उस पर अपना खुद का रिएक्शन करने वाले हो. दैट इज द की डिटर्मिनेंट बिटवीन a good trader and a novice trader. Okay. So first thing, believe in your analysis. Do your preparations on a regular day-to-day basis. Markets opinions can change up and down. हो सकता है काफी बार हम लोग के साथ भी होता है कि एक आपने कोई एनालिसिस की है एंड यू नो एंड देन इट doesn't respond to your analysis. So that's okay. But we can apply the principles of technical analysis to डिटर्मिन दिस. सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. व्हाई? अगर हिस्ट्री हिस्टोरिकली क्या होता है कि अगर मेजर सपोर्ट ब्रेक होता है प्राइसेस विल लाइकली टू ट्रेड लोअर. ओके. दैट इज व्हाट वी हैव सीन हिस्टोरिकली कि अगर मार्केट में अगर की लेवल्स ब्रीच होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं आइदर ऊपर की साइड या नीचे की साइड, मार्केट विल टेंड टू गो इन दैट डायरेक्शन. सो विल टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेटर. ओके. तो अगर हिस्टोरिकली ये रिपीट है तो अगर आप इग्नोर करते हो देन फेयर इनफ. बट इट विल रिपीट. अगर की लेवल्स ब्रेक किया है मार्केट विल कम डाउन. इट हैज इट आई मीन दैट इज व्हाट द मोस्ट इनएविटेबल कंक्लूजन इज कि भाई अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हुआ है तो मार्केट नीचे जाएगा या ब्रेक हुआ है तो ऊपर जाएगा. सो यू हैव टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग दिस. ओके. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राइसेस डिस्काउंट एवरीथिंग. देखिए काफी लोग ये समझते हैं कि अरे आरबीआई का पॉलिसी आया तो मार्केट ने पहले से डिस्काउंट क्यों नहीं किया. दैट इज नॉट मेंट बाय व्हाट इज जो एक्सपर्ट्स ने किताब में लिखा है. उसका मतलब ये नहीं कि आप रिजल्ट्स एंटिसिपेट करो. की इकोनॉमिक डेटा, देखिए मार्केट्स विल रिएक्ट बिफोर की इकोनॉमिक डेटा कम्स इनटू प्ले. सी फॉर एग्जांपल इन सितंबर देखिए हमारा जो इलेक्शन हुआ इट हैपेंड समटाइम इन जून जुलाई इफ आई एम राइट. Okay, markets went up for some time. The slowdown started to appear sometime after October. कुछ अक्टूबर के बाद एक्चुअल स्लोडाउन के नंबर आने लगे. तब तक मार्केट ने अपना रुख बदल दिया था. ओके. इट ऑलरेडी स्टार्टेड टू ब्रेक की लेवल्स, की जोन एंड इट हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन. तो लोअर लोअर हाई लोअर लो पैटर्न दिख रहा था. ओके. एट
द बॉटम, ओके सी, मार्केट में अभी अभी लेटेस्ट न्यूज जीडीपी का जो अभी आया था एक हफ्ते पहले, तो कभी जीडीपी का नंबर क्या आया था, ऑलमोस्ट 6.8, काफी लोग बोलते हैं 7.2। इन्फ्लेशन का डेटा जो मैंने आपको कल बताया था, इट हैज कम डाउन टू 2.82, विच इज लोअर देन एंटिसिपेटेड। सो द डेटा इज इंप्रूविंग। हाउ इज इट इंप्रूविंग एंड व्हाट इज द मार्केट डूइंग? मार्केट हैड ऑलरेडी डिस्काउंटेड कि यहाँ से मे बी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ। ये जो कैंडल देख रहे हो वो ट्रम्प का टैरिफ अनाउंसमेंट का है। ओके, सो दिस इज व्हाट price action tells you. Trends will reverse before fundamental data comes into play. Why? Because मार्केट में बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास बहुत सारा कैपिटल बड़ा है, एंड दे कैन एंटिसिपेट थिंग्स बेटर देन what the data shows when it is released. ओके, सो ऐसा नहीं है कि उनको, इट्स नॉट एज इफ कि वो लोग के पास सब इनसाइड इंफॉर्मेशन रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज दैट दे आर बेटर एंटिसिपेटर्स ऑफ डेटा देन व्हाट जनरल पब्लिक इज। देखिए, मैं काफी इकोनॉमिस्ट को लोगों को जानता हूँ, काफी अच्छे इकोनॉमिस्ट है, या तो फिर जो डेटा फॉलो करते हैं। तो समटाइम्स उनका बहुत ही डीप रिसर्च होता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी बहुत बहुत डीप रिसर्च होता है, कि जहाँ पे अगर कुछ उनको कोई कंपनी में इंटरेस्ट है, तो दे विल buy some shares, they will become shareholders, and they will attend a annual general meeting. They will ask relevant questions to the management. और ये कोई भी कर सकता है, anybody can ask questions to management जब भी उन लोग का जो रिजल्ट्स के बाद जो शेयर होल्डर्स के साथ जो मीटिंग होता है, एनीबडी कैन आस्क। एज अ शेयर होल्डर अगर आपके पास 5 शेयर भी है, फिर भी आप सवाल पूछ सकते हो। ओके, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बिकमिंग अ शेयर होल्डर। तो कल हमने कहा था ना आपको, जो जब भी आप कोई भी कंपनी के मेंबर होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। तो लॉट ऑफ पीपल दे एक्सप्लॉइट दिस, दे विल बाय 100 200 shares, and then they will wait for management to come in their press release, and then they will ask questions to them, and management at times they are duty bound to answer the shareholders. Okay, anyways, so this is what three basic tenets of technical analysis are. Prices move in trends, history repeats itself, and prices discount everything. So it's a, तो ऐसा कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर। स्टॉक मार्केट क्या है? इट इज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी, एक मापदंड है। जब इकोनॉमी के पहले एक मापदंड देखिए, तो यूएस इकोनॉमी में हम अभी आज अगर आप लेट्स से नैस्डैक इंडेक्स अगर हम देखते हैं, तो काफी समय Manish, से हम ये देख रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज के। यूएस यूएस में डेट लेवल्स बहुत हाई है, बट द यूएस मार्केट्स आर नियर ऑल टाइम हाई। यूरोपियन मार्केट्स, यूरोप में ग्रोथ कम है, ये है, बट यूरोपियन मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज मार्केट एंटिसिपेट्स ग्रोथ। 2.5% is what the projected GDP growth is by the World Bank for the world economy, which is one of the lowest in the years. But still, why is it then all stock markets in the world are trading at their all-time highs? Majority of them, European markets, US markets, they are within 5-10% of their all-time highs. Okay, so why? Because Manish, there's a anticipation. question Yeah, from Puneet yeah. Sinha. There's a question from Puneet Sinha. How do we know when the previous pattern will repeat itself? So, See, okay, you anticipate that the pattern is going to perform in a certain way. Okay, so if it is an head and shoulder breakout, you anticipate that the prices are going to behave in a certain way. अगर higher highs higher lows का अगर pattern है, you anticipate that the prices are going to make a new high. Okay, so why? Because history repeats itself. अगर कोई trend intact है, और मार्केट ने करेक्शन दिया, तो करेक्शन के बाद वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो हायर, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड टेनासिटी, जो हम बात करते हैं कि ट्रेंड विल शो अ परसिस्टेंस टू कंटिन्यू। ओके, सो नाउ just coming to this question again, if this is sideways, I can expect the market to remain sideways. तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट साइडवेज है,
Okay, I expect the market to remain in this range for some time. Okay, so what happens if agar Tuesday or Wednesday ko, if the market comes at is at around 2580, then what will you do? Will you wait or will you buy? Okay, वो जो भाई साहब जिसने प्रश्न पूछा सज्जन जी, तो उनसे एक प्रश्न, तो आप क्या करोगे? आपका एक्सपेक्टेशन है 25 200 के ऊपर बार नहीं चल जाएगा मार्केट एटलीस्ट फॉर सम टाइम। ओके, तो अगर 25 100 पे मार्केट है तो आप क्या करोगे? विल यू बाय, विल यू वेट? ओके, और if you are buying, something happens, then what will you do? So what will be your plan of action? Okay, yes, anyone? आपका, will you wait, will you buy, will you sell, what will you do? Okay, anyone? कोई बता सकता है? जल्दी यस, जल्दी फास्ट। पुनीत ने कहा है वेट. आई थिंक others also can answer. So waiting, yeah, waiting still means that you are in the market but you are not participating. Okay, you are waiting for an opportunity to materialize. The entry may be a little bit late, but you can be sure. Okay, so you will wait. अगर if starts to go 25 200, okay, 25 100 के ऊपर अगर market 25 150 and there is good news, then what will you do? Then what will you do? कुछ मार्केट में कुछ हुआ कि समाधान हो गया, चलो भाई इजराइल और ईरान का समाधान हो गया, या तो फिर ट्रम्प साहब ने बोल दिया चलो नो टैरिफ जो है वो पहले से जो है वो हम वहीं पे रहेंगे, नो एडिशनल टैरिफ, देन व्हाट हैपेंस? देन व्हाट विल यू? Okay, you can see, you can only expect market to react after the news has come out. ठीक है, 3:30 बजे सब लोग बोलते हैं ना कि मार्केट क्यों नीचे गया, मार्केट क्यों नीचे ऊपर आया, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन क्या 9:15 बजे पे आप डिसीजन ले सकते हो? दैट इज व्हाट द डिफरेंस। आज मार्केट क्यों नीचे गया, इस वजह से गया, आज मार्केट क्यों ऊपर गया, 3:30 बजे के बाद तो सबको मालूम होता है कि आज क्यों बोल। बट द पॉइंट इज वेदर यू कैन anticipate. That is what the key is, my dear friends. It is observing the price. See, start observing the price. अगर आप निफ्टी को regularly observe करते हो, you don't have to go very very deep. Okay, don't let news influence you. Okay, well, you have to be make friends with news. You have to hear, you have to accept. It is news. Sometimes it's like your wife. You have to just simply accept what she is saying. Okay, but you don't do always what you are told to do. Anyway, right? Okay, so I hope I have answered this question. Yeah. Anything else, or we move on? I think, Manish, we can go on. Okay. I think some observation is there. Suraj Uh, ne pucha, I think every dip is a good opportunity. So, yeah. In an uptrend, in a rising market, every dip is an opportunity. Okay. We'll come to trends. We'll talk about trends. We'll just okay. So yeah. now, what is what is the basic trend analysis and trend dynamics? Okay. So what is a price trend? अभी trend का मतलब क्या होता है? Is simply the direction of the prices in the time frame that a trader is observing. ट्रेडिंग नहीं आता, ट्रेडर होना। ओके, तो अगर आप इंटरमीडिएट टर्म ट्रेडर हो, चलो, सो फॉर द टाइमिंग वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। लेट्स से रेफरेंस टाइम फ्रेम इज डेली, हम डेली पे ही ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो अ प्राइस ट्रेंड इज सिंपली the direction of prices in the time frame that you are observing. Okay, so now if I ask this to you, let's say let's look at okay, let's look at okay, now let's see, now okay, last couple of months, what do you think is happening in this particular stock? Let's say अभी मैं आपके स्क्रीन के सामने मैं एक स्टॉक रखता हूँ, what do you think is happening in this?
Is it rising? It is falling. I'm not talking about higher highs, higher lows right now, but what is happening in this one? Is it going up? Is it coming down? क्या हो रहा है इसमें? Anyone? जल्दी जल्दी बोलो. Anyone? Fast, fast, fast. What is happening in this particular stock? Is it going up? Is it coming down? What should I do? Should I wait? Should I buy? Should I sell? Let's compare MCX. Let's put up another stock. Let's say, okay. What about Nestle? Which stock shows you a stronger momentum? Nestle या MCX? Okay. Okay. So see, so basically a trend is simply the direction of the prices in the time frame that you are observing. Okay. So once you look at a particular stock, then you should be able to make a judgment whether the prices are rising or prices are declining or prices are in a range. Okay. So how many? So there are basically three types of trend. तो तीन टाइप ऑफ ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड. राइट? ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना. प्राइसेस विल डू और प्राइसेस कैन ओनली बी इन एनी वन ऑफ दिस डायरेक्शन. ओके. और वो क्या है? आइदर इट इज इन एन अप ट्रेंड or it is in a downtrend or it is in a sideways. Okay. So now what is the pattern in MCX? Is it in an uptrend, downtrend or a sideways trend? बहुत simple है. Higher highs, higher lows दिखता है. See, do we see a pattern of higher highs or higher Manish, lows? Manish, Yes. your PPT is presented. Your chart is not visible. Okay. 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 1 second. Now, okay. So let's talk about okay, MCX. So what is the general direction of prices in last couple of months? Is it up, down or sideways? मतलब एक रेंज में है या प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या तो फिर प्राइस एक रेंज में है. ओके. एनीवन? एम आई क्लियर? हम लोग इंटरैक्टिव रखेंगे दोस्तों ये सेशन को. यू आंसर मी इन यस नो, देन इट विल बी फन फॉर ऑल ऑफ अस. हाँ जी. या व्हाट इज द प्राइस डायरेक्शन इन एमसीएक्स? इज इट अप, डाउन और साइडवेज? I think क्या लगता है? many have answered. If you या can या see the chat box, yeah. एक मिनट. आई कैन लुक एट चैट बॉक्स. अप ट्रेंड साइडवेज बोथ. ओके. सेपरेटा दे बोलते हैं डाउन साइड इन व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट एमसीएक्स. ठीक है. नाउ answer the same question when I'm pulling up this chart in front of you. What does this do? What does it look like in last couple of? Okay. What are the sequence of higher highs and higher lows? Up, down, sideways. क्या लगता है? We are. This is sideways, right? So everybody is getting it right. देखो कैसे मालूम पड़ा? Just simply by observing. Okay. Now up, down, sideways. Let's see. Right. So now what do you do? So देखिए mostly sideways or side. देखो either it is up or it is down or it is sideways. Okay. But we are looking at the daily time. तो अगर आप swing trader हो, okay, अगर आप swing trader हो, stick with daily time. Okay.
then don't go on to weekly and don't go on to monthly, because perspective will change, because trend is time frame dependent. Okay, again, that is a concept by itself, and maybe a deeper explanation is required to merge time frame between different time frames. But for the time being, okay, we are, that's why इसलिए मैंने पहले बोला था, we'll stick to daily time. Okay, so now अभी एक easy hint दे दूं आपको. I'll give you a very easy hint, right? Now the easy hint is this. Okay, okay. Now, three golden rules for trend based trading. In an uptrend, buy on declines. Okay, जब भी प्राइस एक डिक्लाइन पे आता है, okay, when the price is in an uptrend, wait for short term declines to enter into the market, right? So उसमें support, resistance, trend line, so on and so forth, we can take a look at it. Okay, so let's say for example PEL. Okay, so what is PEL? Where is it? It is very near to its support zone. Okay, so now what do I do? I simply have to wait for the prices to just give me at least a reasonable up. Okay, so, and if it is in an uptrend, it will tend to go higher. So I can expect the price to at least trade above this level. Why? Because it is in an uptrend. ये मेरा anticipation. Okay, it is my anticipation that अगर price ने यहाँ से कुछ अपमूव दिया है, I can expect the prices to trade at least up to this point. It will make a new high within this ongoing swing, right? So ये ongoing price structure में what will the price do? It will at least make a new high, right? Manish, your So chart is yeah, not visible. oh, You're sharing the PPT. yeah. Oh, yeah, I just yeah, थोड़ा इसमें timing. Okay, anyways, sometimes I get so lost in what I'm saying. Anyways, chalo. Now it's okay. See, Piram, I'll just explain everything. See, now easiest way is that in an uptrend buy on decline. जब भी price नीचे आता है, तो रुको, wait करो. Okay. It will just show you a short term. Mostly in rare cases, you will find that the prices will just blast to higher levels. Mostly you will see a short term 2 day, 3 day, 5 day decline. देखो जैसे तो this is what is the overall direction of the trend? It is up. Okay. What is an uptrend? It is a pattern of higher highs and higher lows. So this higher highs and higher lows. देखिए, this low is above this low is above this high is above this high, ये high इसके ऊपर है, ये high इसके ऊपर है. Okay, and what is the price doing? The price has just given me a short term correction. Okay, so now इसका conclusion क्या है? Principle of trend tenacity. Price will continue in the direction of the trend. So now what I can do is that simply observe this, and once price starts to go beyond a certain point, okay, I can simply put this in perspective, okay, and expect the prices to go up. How far can it go? At least it will make a new high, or if the trend persists, it can go at least this point. Why? Because you have a major resistance here. So if I buy here, and if price does go to this point 1274, then I have a reasonably good trading opportunity. Right? Clear? ये समझ में आया किसी को, सबको? Yes, no, no, yes. Has everybody understood this? Okay. देखो सबको, I hope everybody is understanding this. हाँ, देखो
तो देखो, अगर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, देखो, ऑल यू ग्रेट लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। जब तक खुद का प्रिपरेशन नहीं होता है ना दूसरे दिन के लिए, यू विल कंटिन्यू विथ योर स्ट्रगल ऑफ ट्रेडिंग इन अ प्रॉफिटेबल मूव। फ्रस्ट्रेशन आते हैं, देखो, हर बार ब्रेकआउट क्लीन नहीं होता है, कभी कभी ब्रेकआउट फेल भी होते हैं, क्योंकि अभी देखो कुछ कुछ घटना घटती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, थिंग्स कैन गो अगेंस्ट। बट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग किसको बोलते हैं कि ओवर अ लार्जर सैंपल साइज, अगर आप डिसिप्लिन से, ट्रेंड के हिसाब से, यू वेट फॉर अ करेक्शन, यू डू योर होमवर्क, okay, and then you execute your trades with a proper risk management plan, then eventually over large sample size you will be a winner, or you will be a profitable trader, okay, over a large sample size. This is what is important. काफी लोग बोलते हैं ना कि सर अगर डेफिनेटली बढ़ने वाला होगा ना तो क्वांटिटी ले लेता हूँ, राइट? ऐसा मत करो, okay, have a, a a trading plan, have a risk management plan, and then you go on it. Okay, now let's go to that another example. कौन सा था? We were talking about Nestle. Now what does Nestle do? तो इसका सेकंड हिंट क्या है? देखो, in an uptrend, you buy on declines, in a downtrend sell on rallies, in a sideways trend buy at the range support and resistance. So buy at support and sell at resistance. So now, okay, we'll talk more about support, but if Nestle comes down to this zone, it may become a good trading opportunity. It may, I'm not saying definitely होगा, अगर नहीं आया तो fair enough. But if you are preparing as a trader, we'll talk about support and resistance more in detail later in the program. But if price comes down to a support zone, then and the trend is sideways, you can initiate a buy. ओके, अभी आप डिसाइड कर लो आपको ट्रेंड फॉलोइंग बनना है या तो फिर आप वाइड ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करना चाहते हो। देखो, समथिंग लाइक एमजीए, ओके, दिस इज एन एक्सेप्शनल एग्जांपल ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रेडिंग रेंज। Manish, again, या your chart is not visible. या ओके, फाइन, ओके ओके, अभी दिख रहा है? सी, ओके, नाउ सी दिस नेस्ले, वी आर, ओके, सी व्हाट इज नेस्ले डूइंग, इट इज हियर। So now I'll also teach you how to identify, locate support zones and all everything. So we still need to wait. Now, when I go at MGL Mahanagar Gas, see this is in a prolonged trading range. Okay. See, देखो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड टेनासिटी का बेस्ट एग्जांपल, ये ट्रेड जब तक रहेगा तब तक रहेगा। Okay. Maybe here or here. Okay, I can wait for the prices to drop down to this level. Okay, then wait for something to happen. Okay, and I can expect the prices to go up till here. This can be a safe trading way to do it, depending on how you look at it. So we are probably in a what, 8 to 10% range. Yeah, it's almost a 12%. So this is essentially, I'm talking about swing trading. Same concepts can be applied either on a weekly chart, or they can be applied on a monthly chart, or they can be applied even on a 5 minute chart or a 13 minute, or a day trading करना चाहते हो, same concepts can be applied. तो आपको सिर्फ you have to observe that what is it that you want to do. Okay, charts price action जो है वो कहते हैं टाइम फ्रेम agnostic. It doesn't care, prices don't care in what time frame, patterns will repeat. Okay, so golden rule for trend based trading is, let's go back to the PPT. In a sideways trend, buy at support or at the edges. Okay, edges identify करो, अगर प्राइस उधर आता है तो अलर्ट डाल दो। यू कैन पुट इन अलर्ट्स की, अगर यू कैन पुट इन अलर्ट इन द सिस्टम की, अगर मान अगर 1250 के उधर आता है तो मुझे अलर्ट कर दो।
Okay, so it will alert you, uh, that the prices are at a support, and then you will start observing. Okay, so in a sideways trend, buy at support and sell at resistance. In an uptrend, buy on declines. In a downtrend, sell on rally. Very simple. Okay, so just abhi to shayad maybe I don't know if we can really put out. Okay, see this is pretty light. Okay, classic range. देखो आज prices Uh, they just hit this. chart is not visible, Manish. Yeah. One second. Oh, okay. See, classic example of a range bound. Okay, I know some some friends who are they are into institutions uh, broking, and they simply remember these numbers. वो लोग को by heart रहता है. Okay, a classic example of a trend trading, and again a classic example of sorry, this Pidilite and Nestle were examples of sideways range, and uh, कौन सा देखा था? PEL is a classic example of a trend move. See, PB FinTech again exceptional trending move. See, higher highs, higher lows, price comes down, corrects now. Okay, so now chalo, let's go back to MG. Now supposing what happens, मान लीजिए कि price actually is coming down to this point. Okay. And then it breaks below your support, then what do you do? अरे सपोर्ट तो काम करना चाहिए था, नहीं काम किया तो क्या? Exit the trend. So trend analysis will give you entries. It can give you possible targets, right? तो MGL अगर इधर आता है, ये रेंज रहेगा, तो ये आपका टारगेट हो गया ना 1410. हो गया ना 1410. अगर इधर लेते हो, यू कैन सेट अ टारगेट एट 1420. Okay, so that is your target. You can have a stop. Why? Stop is below the range. अगर 1430 आता है, अगर if price let's say it breaks down below 1180, 1190, then you know that the support is getting violated. Then you can get out of it. ठीक है, कभी कभी इसमें होगा भी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि prices will break, take your stop loss and reverse. होता है, it is possible. वो विराट कोहली जब भी बॉल को हिट करता है तो हर बॉल बाउंड्री पे नहीं जाता है ना, कभी कोई बॉल और फील्डर के पास भी जाता है, वो रोक भी लेता है. So you have to accept this as a fact of life, that there will be certain trades that will not go in your way. The other day, I'll just give you a personal example. BPCL bought at reasonably good levels. BPCL, see, let's just open the chart. BPCL, okay, missed my target by 20 paise. Okay, now what do you do? ये देखो, it missed this target by 20 paise. It was a classic breakout of a pennant. Yesterday the market tanked and boom. See, हो सकता है, this is likely, this होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, it happens and you have to accept it. Okay, so in a downtrend, see BPCL, हम लोग ने uptrend और sideways का ही बात किया, right? So this is an example of a downtrend, pattern of lower highs and lower. It comes up, you sell. It comes up, you identify a resistance, and it will go. Somewhere down the line, the trend will change. Okay, तो ये कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड टिल इट बेंड्स. ओके, जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है, देन it is time to exit your position. It is time to start thinking afresh कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाने वाला. ओके, तो निफ्टी में वो डिसीजन कभी ले सकते हो आप, when you have a breakout, a reversal pattern, and so on and so forth. जब भी होता है, you can say that the market is now not likely to decline further. Okay, it is not likely to decline further. Okay, so this is, at some point you have to accept that, right?
Right? Any questions up till this point? Follow. Before we move on. No question, Manish. Let's move Fine. on. Let's move on. Okay. Okay. So, uh, okay. Now, trend will keep on. It doesn't remain the same. Okay. So, okay, now let's look at this phase here. Okay, this is your oil India prices. They were in a range, and then there was a sideways action, and it broke in the direction of the ongoing trend. So in this case, your larger degree trend, the weekly trend is up. But I'll not confuse you. So this is, you also have to, as you progress in your analysis, you also have to merge your analysis on one time frame and try to compare it with the analysis on a higher time frame. Again, this is a relatively advanced concept. Maybe we'll talk about it some other time, right? So, so now what we have done, we have talked about trends. We have talked about basic tenacity, uh, uh, the basic dynamics of trend. But there is also there is a lot more to trends than this. I'm just giving you a very brief overview. The entire Dow theory was based on identifying trends, higher highs, higher lows, and on that matter, right? Now, when you are observing price, देखो चलो अभी ये ट्रेंड इधर हम लोग एक कुछ समय के लिए इसको आराम देते हैं, विराम देते हैं, move to another topic and then we'll combine various topics. Okay, now basically what is candlesticks? Okay, देखिए हमें हमारे पास डेटा है, लेकिन वो डेटा को प्लॉट तो करना पड़ेगा. So we have to plot the data. I hope you can see the PPT, right? Yes, Manish, we Ah, can yeah, see the okay, fine. PPT. Right, right. So now, basically, when you have a continuous stream of data, it has to be plotted in a certain way, right? हमको डेटा तो प्लॉट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एनएससी में से जो प्राइस आता है उसको we have to plot them uh, in a language that we understand. Okay, so now there are different ways of plotting price data, right? So easiest one is line charts, जिसमें हम सिर्फ close ही plot करते हैं. Then we have bar charts, open, high, low, close. Then we have candlesticks, but I'm not going into line charts and bar charts because abhi rather it is defunct now. So default default method of charting has now become candlesticks, which is again a relatively new concept. Maybe 1995, 96, Steve Nissen came out with this book, and that radically changed the way people started to look at charts. Anyway, so basically अभी अभी आप सोच रहे होंगे ना कि ये रेड और ग्रीन क्यों है. Okay, so a very simple concept. मैं उसके ज़्यादा I will not take too much time into it. So when you are looking at a price chart, uh, a red candle का मतलब है कि days close is below the open. Okay, जो आज का बंद भाव है वो ओपनिंग से नीचे है, तो आपकी कैंडल का कलर बनेगा रेड. Okay? और अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका मतलब ये होता है कि द क्लोज इज हायर देन द ओपन. ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव हियर इज निफ्टी. देखो निफ्टी में क्या हुआ, yesterday the market closed at the low and today the market has closed above the open. Now look at this. देखो न्यूज़पेपर में क्या दिखाएगा आपका कि मार्केट 169 पॉइंट्स नीचे था कल के हिसाब से. बट इन रियलिटी व्हाट हैज हैपेंड, why is the candle green? Because there was buying that came into play. Okay, market में buying आया था
उसकी वजह से फ्रॉम ओपन टू क्लोज, अगर इफ यू गो डाउन टू अ 30-minute चार्ट, ओके, आफ्टर दिस लो ओपन द मार्केट सॉर्ट ऑफ हेल्ड. देखिए, अगर इतना खराब होता था तो देन मार्केट शुड हैव गॉन डाउन टुडे आल्सो, राइट? बट इट हैज गॉन डाउन. बट व्हाट हैज हैपेंड? इट हैज नॉट कवर्ड द एंटायर लॉस ऑफ yesterday, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कवर किया है. It means that this action is relatively bullish. Okay, you can expect at least maybe a slight higher open depending on what the US markets are going to be today evening. So we will have to check that. But so candlesticks का क्या है? Candlesticks का एक important aspect ये है कि वो कैंडलस्टिक्स थियरी ओपन और क्लोज के रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है रादर देन क्लोज टू क्लोज. रोज टीवी में हमारा क्या आता है? रोज टीवी में तो क्लोज टू क्लोज कंपेयर करते हैं ना. तो कैंडलस्टिक्स क्या करता है? वो ओपन टू क्लोज का रिलेशनशिप कंपेयर करता है. ओके, सो नाउ टुडे इट इज अ रिलेटिवली बुलिश कैंडल. व्हाई? थोड़ा तेजी का कैंडल है. व्हाई? बिकॉज द मार्केट ओपन एट द लो and it has closed almost near the high. See, same pattern here. Market has opened at the low and it has closed at the high, and there was a slight pump up. Okay, next day the market opened higher. Okay, so this can be a tradable thing. अगर आप BTST करना करना चाहते हो ना कि आज मुझे क्या करना है, लुक एट दोस कैंडल्स. हर बार नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डेफिनेटली महीने में कुछ ट्रेड तो मिल जाएंगे जहां पर ओके मार्केट बिल्कुल लो पे ओपन होता है एंड इट क्लोजेस एट द हाई. ओके, इट ओपन नियर द लो एंड इट क्लोज एट द हाई. ओपन नियर द लो, क्लोज एट द हाई. ओके, दिस open near the low, the market uh, didn't open, so maybe this could have been a losing trade. This could have been a losing trade, but 1, 2 and 3, these three were all winning trades. So if you want the bread and butter trading strategy, look at the relationship between the open and the close. अगर मार्केट नीचे ओपन होके ऊपर की तरफ इट क्लोजेस नियर द हाई, देन देयर इज अ स्मॉल चांस दैट इट इज गोइंग टू ओपन हायर द नेक्स्ट. ओके, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. तो आप प्रोबेबिलिटी मतलब सुबह सुबह आपको समझिए मार्केट 9 बजे ओपन होता है, मे बी market will open 40 50 30 40 50 points from the previous close, but it's a high probability. कभी कभी तो 150 200 पॉइंट भी ओपन हो सकता है. देखो यहाँ पर strong candle, the market opens higher the next day. Strong candles, market opens equal, छोटा सा मुंह आ जाता है. Then you don't see, then you don't hang on to it. एक बार आपको थोड़ा पैसा मिल गया, then you have to also manage it. Okay, right? ये समझ गए? Has everybody got this concept? How you can just have a very very simple trading strategy using one simple candlestick pattern, right? ये समझ गए? Has everybody gone into this? Okay, ये समझ में आ गया? Right. Yes, it happened. Yeah. हाँ, देखो, अभी दूसरा इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? अभी हम इसको ये कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? हम जो भी सी मुथूट फाइनेंस ओपन एट द लो एंड इट क्लोजेस एट द हाई, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. नाउ अगर मार्केट ओपन हायर होता है, यू शुड ऑलवेज हैव अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट शो यू दिस टाइप ऑफ कैंडल. 4 5 6 है ना, लिस्ट बना के रख तो अगले अगले दिन शाम को जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, अगर इसका स्ट्रॉन्ग ओपन है ना, यू विल एटलीस्ट हैव सम प्रॉफिटेबल मूव इन फर्स्ट 20 or 30 minutes of the day. Okay. See, Muthoot Finance here, it opened. This is 6th of June, right? See, strong candle. Okay. Next day, the price opens higher, and there is a quick move, right? Sometimes the price move can happen in matter of minutes. See, this is ये क्या है? 6. Now let's go to Nifty on the 6th. I'm just trying to explain you this concept.
See, sixth, okay, we had a strong candle. Market opens higher the next day. Muthoot Finance also gives you a small short term for the in the next day. देखो, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पुरुषार्थ करो, मेहनत करो तो फल मिलेगा. ओके, दिशा मैं दिखाऊंगा, पुरुषार्थ आपके हाथ में. ओके, व्हाट आई एम शोइंग यू इज प्योर गोल्ड. राइट, समझ गए? यू नो नाउ, यू नो व्हाट टू डू. ओके, मार्केट नीचे अगर ओपन होता है तो क्या करोगे? लुक एट रेड कैंडल्स that are closing near the lows. Let's say, for example, NHPC. Nahin. See, this is a green candle. Don't look at only red, only this number. Okay, you have to look at a strong green candle. See, Metropolis. Metropolis, maybe there could be a slight drop down, sideways action. Maybe यहाँ अगर है तो you can just maybe 1638, 1635. See, ये these are bread and butter trade. इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप इसमें बहुत बड़ा ट्रेड ले लो. No, these are this is a business, right? Just take small nibbles. Take even, let's say, 0.2% of your portfolio if you can make on a single trade. Regular day in and day out, then probably you are on the right path to become a profitable trader. अगर आप डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो, फिर then you are not into this sort of a price movement. If you want to be a swing, then fair enough, then you can look at other strategy. But अगर आप रेगुलर ट्रेड करना चाहते हो, then these are some tricks, and these are some tricks that you can do. Okay, so candlesticks में क्या होता है? Let's go back. These are, see, candlesticks by itself है ना, ये बहुत बड़ा subject है. You have tons of material that is different, but there are some things that can be used easily. You want to go deep, make a deep dive into it, then also it is good enough. Okay, so why candlestick charting? Because data is pleasing to the eye. Okay, it gives more importance to relationship between open and close. तो ये point मैंने cover कर लिया. देखो, अगर आपको ये दिखता है, see, this is you can see that candlestick charting gives you a better perspective of the price. Now why? बहुत सिंपल है. अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता है ना, तो जस्ट टेक 20 odd candles. ओके, और उसमें गिनो रेड, मतलब ये है यहाँ पे. गो बैक इन टाइम. ओके, जस्ट गो बैक 10 20 15 20 कैंडल्स. राइट, ऐसा कुछ ये नहीं है. सी विच कलर इज डोमिनेटिंग द लैंडस्केप. लास्ट 20 दिन में कौन सा कलर के कैंडल्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं लैंडस्केप को. ओके, सो लेट्स से समथिंग लाइक नौकरी. ओके, लेट्स से अनदर. सी, दीज आर इक्वल, राइट? देखो, 10 में से अगर आप 20 देखते हो तो थोड़े ग्रीन है, थोड़े रेड है. ओके, बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट समथिंग लाइक एमसीएक्स, सी, what does what does this indicate? This is sentiment, राइट? सी, लास्ट 20 कैंडल्स में देखो कितने सारे ग्रीन कैंडल्स है और कितने सारे कैंडल्स ओपन होके ऊपर की तरफ बंद आते हैं, है ना? राइट, डू यू सी दिस? So candlesticks, they will show you a change in sentiment. Very, very important use of candles. Okay, just by observing the total number of candles, okay, after a prolonged decline, let's see MCX. Let's look at here. ओके, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिक्लाइन, देखो काफी टाइम से एमसीएक्स नीचे आ रहा है. 4 2 3 4 महीने से ऊपर से 20-30% प्राइस नीचे आ गया. सी, लुक एट दिस. नाउ सी व्हाट हैपेंस. आई जस्ट जूम दिस. आई जस्ट जूम दिस. व्हाट हैपेंस? सी, डोमिनेटिंग कलर सेवरल ग्रीन कैंडल्स. ओके, देखो, या रेड 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 रेड, यहाँ पे चेंज इन सेंटिमेंट. लॉट ऑफ ग्रीन कैंडल्स आर अपीयरिंग. What does green candle indicate? It indicates that buyers are getting stronger. Series of red candles indicate that sellers are getting stronger. बस मार्केट में दो टाइप के तो प्लेयर होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं. ओके, अगर आप बायर और सेलर की नियत समझ जाते हो तो आपको मालूम है कि आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना है. उस पर ट्रेंड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो. यू हैव अ रीजनेबली गुड, वेरी इजी वे टू अप्रोच द मार्केट. Okay, technical analysis need not be complex. It is the way it is presented to you and the way you can simplify it. That is what, at least what my endeavor is. वही मेरा एक कोशिश रहता है कि सब सब्जेक्ट को आसानी के साथ
प्रस्तुत किया जाए लोगों को। काफी सारे, बहुत सारे वहां पर है जो मैजिक इंडिकेटर, मैजिक दिस, मैजिक दैट, देयर इज नो मैजिक। ओके, कोई सचिन तेंदुलकर के पास या रॉजर फेडरर के पास कोई जादू का बैट नहीं होता। इट टेक्स, इट्स अ स्किल दैट टेक्स टाइम टू डेवलप। एनीवे, लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। ओके, तो जादुई छड़ी एक्सपेक्ट मत करो। uh, see, another just a candlestick chart that we have here. Okay, देखो, simply eyeball total number of green and red candles over a period of, let's say, 20 days. See which color is dominating the price landscape. Okay, and you will get a reasonably good idea whether the price is bullish or bearish. Just have some water. Okay. The best results will be obtained when candlestick patterns are combined with surrounding price action. See, this is the most interesting part of candles. Okay, so every candlestick, है ना, it tells you a story. Now there are several patterns. I mean, we cannot go through all the patterns, which is just not possible in this time. But we'll come to discussion. See, candlesticks में bullish reversal pattern है और bearish reversal pattern. तो bullish reversal pattern क्या है? Bullish reversal pattern का मतलब ये है कि कुछ दिनों से प्राइस, candlesticks is a short term indicator. It just shows you the direction of the prices over next couple of months. Okay, तो मेरे पास चार्ट है MCX का that I am seeing right now. Okay, now this is so now see, if you locate a pattern after a decline, see this is somewhat, ये जो है ना, this is the morning star. अभी I cannot go into all the patterns, but at least I will try. Okay, अगर काफी दिनों से प्राइस गिर रहा है, मतलब प्राइस 2 4 5 दिन 6 दिन से अगर गिरावट आ रहा है और उसके बाद में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है, तो उसका मतलब यह है कि शायद कुछ समय के लिए ये गिरावट रुक जाएगी और प्राइस विपरीत दिशा में जाएगा. इट विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सी, MCX has in a strong trend, it is coming down. This is a small bullish engulfing pattern, if you notice. Okay, I can easily, or a bullish piercing pattern. You have to remember the patterns, you have to identify them. You will get several internet ka sources ki patterns kya hai. The best book on it has ever been written on candlesticks is 2 books by Steve Nissen. He has written other books also. Candlestick charting explained. Look, search for Steve Nissen. Okay, and you will get all the names of all the books that are written by. So जिसको इंटरेस्ट है इसमें, they should read Steve Nissen. तो Steve Nissen साहब ये भी कहते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और ईस्टर्न कॉन्सेप्ट, जापानीज कैंडलस्टिक जापान का कॉन्सेप्ट है, ईस्ट का, तो दोनों को जब भी आप कंबाइन करते हो, ओके, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. Okay, and which is actually a fact. Candlesticks over this period have been now used by Elliott wave analysts. You know, तो वेव एंड होता है तो वहां पे क्या बुलिश पैटर्न दिखती है, या तो फिर आपको लगता है कि कोई एक 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 प्राइस मूव का अंत आ रहा है, तो देन यू लुक एट वेरियस कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो आपको ये पैटर्न दिखेगी. व्हाई? बिकॉज इट इज जस्ट सिंपली अ प्ले ऑफ demand and supply that you are seeing, right? So what you can do is that you can look at several patterns. We'll also try to identify patterns at the relevant uh, right. So bearish reversal pattern मतलब price is going up and then you have a bearish pattern, but then it shows you a small short term decline. इसमें pattern failure का भी concept आता है. Again, that is, you know, a slightly advanced concept. Okay, so इतना एडवांस भी नहीं है. चल, आई जस्ट पैटर्न देखिए उसके पहले, लेकिन आपको पैटर्न समझना पड़ेगा. तो कैंडल स्टिक्स में अलग अलग टाइप की पैटर्न होती है. सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, 2 कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, एंड सो ऑन.
So what I'm showing you a cheat sheet that you can either locate it on the net, or maybe you can so there are different types of patterns: hammers, bullish engulfing, bullish piercing, bullish three inside out, morning stars, multiple dojis, bearish reversal में shooting star confirmation के साथ, bearish engulfing, bearish dark cloud, bearish three inside out. And this is only a handful of patterns that I'm giving you. In his original book, Steve Nissen has given many such patterns. He has also talked about continuation patterns that you can see on the price chart. Okay. Now, that's what I said. Now, we also have we can also have a cheat sheet. So you have hammers, inverted hammers, dragonfly dojis. देखिए, हर candles it tells you a story. Now, what is meant? Now, see, a candlestick pattern failing. It is also called as a pattern failure. I'll just introduce this concept here, and then I will stop. We will try to look at bullish patterns at the relevant uh, uh, price action. Okay, so uh, so that is what we'll try to. Let's go back to charts. Now I hope let's this is a bullish morning star. ये देख रहे हैं ना? I hope this three candles, one, uh, two, and okay. This is a bullish morning star. Okay, prices are relatively in an uptrend, higher highs. This is a double bottom breakout. We'll talk about double bottom sometime later. And then the price continues. See, green candles, short-term decline, and then the price move continues. Now, this is a bullish pattern at a relevant support zone. Now, see what happens. Okay, how you can trade pattern failure. See, pattern failure का मतलब क्या होता है कि आपको bearish pattern आपने देखा. See, ये जो पैटर्न है ना, ये this is a two candlestick pattern. Either this is a bearish engulfing, or it can be an evening star. This is a bearish pattern. It is taking place above the support, above the resistance zone. Okay. And then after this pattern, instead of price going down, okay, this pattern is violated and the price goes in the direction of the trend. This is what is called as pattern failures. कितने लोगों को लगा कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा इजी है? समझे? Are you with me? Are you with me? You can we get the she? Yeah, you can. It's very easy, right? Okay. Are you with me? आप समझ रहे हो what I'm trying to say? Patterns, relevant patterns at the price action, at the surrounding price action, and pattern gets yeah easy, but so many candles, so sometimes confusing. Yeah, it always happens. पुनीत सिन्हा जी कह रहे हैं कि so many candles, but so sometimes confusing. Practice. Okay? जितना devote करोगे time, concepts will get clear. There is a learning curve. I can only shorten your learning curve. मैं आपका learning curve को कम कर सकता हूँ, लेकिन उसको eliminate नहीं कर सकता. हताश मत होइए, right? See, uh, let's go back to the MGL example. Okay. Now, yeah. So you can search for patterns
and so on. How to identify a reversal pattern? See, reversal pattern का see you have to understand that there are different types of reversal pattern. जो मैंने आपको ये दिया था ना, तो cheat sheet दिखाया ना, you can get it on the net also. Uh, but there are many reversal patterns अभी, and each pattern का एक definition होता है. Okay, so you have to learn those definitions. So you know, see, this is a reversal pattern. See, ये morning star है. See, this is a morning star. ये 1, 2 and 3. It's a 3 candlestick pattern, morning star. Okay. See, very similar. Let's see if we can pick out. Okay, we only have one morning star. Okay. ये जो है, this is your uh, almost a bullish engulfing. Okay. It just shows you a direction over next couple of days. Okay. It just shows you a direction over next couple of days. Now, if you see price at a support zone, okay, मतलब अगर प्राइस एक जोन में आता है, okay, सपोर्ट मतलब क्या, there are different measures of support. Okay, we'll talk about support, then we talk about some chart patterns, right? See, support मतलब क्या कि price, let's put it this, let's talk about something on support zone, and then we'll go on to support. I wanted to take it in the end, but anyway, so now that we are here, let's do this. I'll just remove it. See, now just look, observe this chart. Okay. Now see, price bounces off this level, right? यहाँ से price bounce करता है. Why does this happen? See, if I just change this time. Now, what do you know? What do we see? This is bearish, but prices, they are at a support zone. Support zone मतलब क्या? कि sometime in recent past, prices have hit a zone and they have moved higher. When price comes back to that zone again, you can expect buyers to come in and push up the price. This is what is meant by support. There are different measures of support, but we are using price action as the support. Okay. So now you understand this. Now, where is this price? Prices, they are at a support zone. Okay. After price comes at a support zone, now you, what do you want to see? You want to see, now support zone पे price क्या करेगा? It will attract buyers and prices can at least temporary, it can pause or it can show you a change in direction. ठीक है, तो प्राइस जब इस सपोर्ट पे आता है, तो सिंपली वेट, क्या यहाँ पर बायर्स आर दे रियली कमिंग इन? ओके, देखो प्राइस ऊपर कौन लेके जाएगा? बायर्स लेके जाएंगे. Now see, another day passes, prices are at a support, small real body candle. Then what you have is a strong green candle. This is now a morning star. Prices are at a support zone. What you can anticipate is that this range, this might hold. Prices can move up at least to this level. So either you can buy here or wait for some decline, whether the prices are giving you a risk reward. Now you have a trade, you have a candlestick pattern, prices are at a support, and you have a reasonable chance of price moving higher. You have a possible trade here. Okay. And you have to just take relatively small quantities if you want to exit the trade. So you are at a support zone, you wait for the prices to come down, and then you act. Okay. So now let's Manish, I think yeah, there's a question from Puneet in this context. yeah. Can you refer to that question? One second. क्या पूछते हैं? See,
is it possible that price is 5? See, then you have to ये decision आपको लेना पड़ेगा. Okay, Puneet ji, okay, I've just Puneet ji ये पूछ रहे, is it possible that the price is 5 to 10 points away from support and still bounce back? Yes, it is possible. See, now let's see. Let's uh, let's get out of this one. Now let's see. Now this is at a support. See, now you have to decide. यहाँ पर मैं लेता हूँ, then will my should I wait for the prices to come down? Okay, or the prices are going to reverse from here. See, अगर ये support किया and price goes up, you miss the trade, so be it. So now let's look at कौन सा stock? Let's look at Nestle. चलो, हम लोग जो stock देखा था, let's apply. Let's see if we can find some bullish patterns here. This, I think Nestle में हमारा ये conclusion था, the prices may still need to come down slightly lower. So let's look at Nestle. See, now prices are not exactly at a support. I would say the support is this. Why? Because the prices previous bounce was from this level. Okay, वो यहाँ से था. It was not from here. Yes, slightly the sharp move appeared from here. So this is a more conservative number, right? So now you wait. Keep Nestle under observation. See if when it comes down here, how the price behaves. Okay, sometimes prices may come down. It is also likely that the prices may reverse before the support. But you see, understand one thing. What you are trying to do is that you are trying to buy at the price level you want to buy. आप समझ रहे हो? You will find other. देखो, अगर आप मेहनत करोगे, you will also find other some other stock also where the prices are at a support. Okay. So देखो, सब तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं ना हम. We cannot trade each and every stock. There are 180 stocks only in FNO. किधर ना किधर तो कोई ना कोई तो सपोर्ट पे आया. इट विल नो थोड़ा हार्ट ब्रेक होता है कि ये मिस हो गया. बट दैट इज ओके. अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है. ओके पुनीत जी. ओके. इज इट is it a relevant answer? Okay. Right. So so now you have to look at a lot of these. See, you can also scan for candlestick patterns, but again, uh, pattern by itself is not so important. It is the context in which pattern कहाँ पर होता है. Okay, it is not. अगर आपको शायद बहुत सारी ये मिल जाएगी कि ये जो पैटर्न है वो इसमें. See, do we need each and every stock or any screener for this? You can use screeners, Srinathji, but again, relative, you have to put in the relevant data points for each. Then, so the idea is that, see, if you are a regular trader, I would say that only look at a limited number of stocks. Nifty 50, you can select. Sensex 30, you can select, but don't select. See, if you cannot do justice to analyzing a very large number of stocks, then do something that you can manage. Okay. Yes, भीमराव जी का सवाल है. Support and resistance level changes over time. Yes, they will change over time. Prices change, support resistance level will also change. Right? Now, this is something on candlestick pattern. It's a huge topic by itself. I mean, sometimes, uh, now chart patterns. Okay, now what are chart patterns? Chart patterns, they form a part of uh, the larger uh, realm. It comes falls under the realm of Western classical uh, uh, technical analysis. I love patterns. I trade them a lot. I like to identify those patterns. Okay, there are many set patterns. You have double bottoms, you have double tops, you have reversal patterns, continuation patterns, and so on and so forth. Okay, it takes time and effort to identify and trade these patterns. It is possible that you are able to set targets using patterns. Okay, so right, so patterns at times they can fail, they do fail. Let's say, for example, I had picked out this
I had picked out this particular stock at couple of months ago, Asian Paints. I identified this as a maybe a possible, but it was not exactly a pattern, but it was more of a negative divergence. So, you know, try to get in here. Nothing much happened and the price rose. Okay. So patterns, they do fail at times, but I think it's a very, very high probability that patterns at times they will work. See, now something like Manish, Asian chart is Paints is not at a very, visible. very, yeah, okay. Yes, now see, Asian Paints, I identified this as a double bottom trend reversal pattern, but it didn't work. But it didn't work in Asian Paints, but in many other stocks, it worked like a charm. See, let's say, for example, this Adani Port. See, Adani Port, this pattern breakout worked exceedingly well. Okay. Asian Paints, it didn't work. See, this was a more of a triple bottom where you have multiple bottoms and the price broke out. And, you know, and then the price sort of just moved ahead of the curve. Okay. So the patterns they work, there are a number of patterns. One of the patterns, my favorite pattern is a rectangle, right? So I'll just put things in perspective. So you have a thrust, prices they go in a range. Okay. It is a continuation pattern, means that there is a very high probability that the prices will go above this level. And in this case, we can expect the price move after the breakout to be equal to the size of the pattern. मतलब size के हिसाब से we can expect the once there is a pattern breakout, we can expect the prices to move higher. That is the minimum level. Okay. उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है. Okay, so how can we identify patterns in our day-to-day trading? There are times, see, you don't see a pattern always, but your brain has to be alert कि यहाँ पर मुझे pattern दिख सकता है. So now let us try to apply this concept of a rectangle. There are two nifty. Let's try to apply this to nifty. Now, see, now after a strong move up, okay, यहाँ से we are in a range. Okay, so what is this? Is nothing. This is a line. This is what Dow theorem is for line कहते हैं. And this got translated as a rectangle. Okay, so now if this is a rectangle, okay, okay, once the price breaks out, I can expect the prices to go a distance equal to the size of the pattern. तो ये पैटर्न का अगर डिस्टेंस 25,200 से लेके मान लो अराउंड 24,500, दैट इज अराउंड 700. Okay. तो अगर 700 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर जाता है, देन आई एम लुकिंग एट अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 2600, 26,000. Okay. So now what? If I buy here and this is the target, now couple of things I can do. Either I will buy here and keep my stop below the support zone. तो अगर मेरा सपोर्ट जोन 24,400 है, आई एम बाइंग एट 24,700 और तो 300 मे बी 350 पॉइंट्स का टारगेट पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये ट्रेड वर्क किया है तो 24,700 से 26,000, सो व्हाट 1,500 14 1,500 पॉइंट, तो 300 पॉइंट के स्टॉप में आई कैन देयर इज अ चांस दैट आई विल गेट अ रिवॉर्ड of 1:3 times or 1:4 times my initial risk. मेरा रिस्क कितना है? अराउंड 300 पॉइंट्स. मेरा पोटेंशियल टारगेट कितना है? 1400 पॉइंट. तो it's a reasonably good trade to take. So even if you are right 50% of the time, I'm just put this in perspective. मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 5 सही गए हैं, 5 गलत गए हैं. एवरेज प्रॉफिट
आपको 2 टाइम द रिस्क है। तो मान लीजिए आपने 2,000 रुपये का प्रॉफिट एक ट्रेड पे बनाया, तो 5 ट्रेड पे आपने 2,000, 10,000 रुपया आपको आपका प्रॉफिट हुआ, और 5,000 आपका लॉस हुआ, फिर भी आपके जेब में नेट प्रॉफिट आता है। दिस इज द जिस्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, वेयर you are expecting that there is going to be a certain amount of failure. It has to be built into the system. I am expecting at least, let's say, a 50% times that my trade can go wrong. Okay. But in other 50%, if I identify those opportunities where I am going to get a very a relatively high rate of return, then that is the point where I want to hit the ball, right? तो देखो, अच्छे जो बैट्समैन होते हैं ना, सब बॉल पे सिक्स मारने को नहीं जाते, राइट? आईपीएल नहीं है, दिस इज नॉट आईपीएल की आउट हो गया तो आपको 25, 30 मैच, 40 मैच खेलना है। ओके, यू बी सिलेक्टिव अबाउट योर प्लेयर्स। Technical analysis, price patterns, candlestick patterns will help you in selecting those trades which are high probability trades. High probability trades will only come to you if you are patient enough to wait for the opportunities to fall in your lap. Okay, तो उसके लिए क्या है, you just have to keep on observing. You have to look at several charts. There are, we can ease it, we can use several, we have not even talked about indicators here, but there are ways to do it where you can, identify those proper indicator movements. You can identify patterns, you can identify flags. BPCL, the chart that I had showed you earlier, it was a breakout of a classic. See, I'll just show you वो दिन क्या हुआ था before we end, before we come to question and answer session. I'll just show you just 2 more minutes. See, BPCL may, I'll tell you what happened. Okay, BPCL was here. See, the other day when all the oil stocks were going up, see, this is what happened in BPCL, right? Prices went up. On the same day, I was also looking at Hindustan Petroleum and IOC. Okay. See, look at him. This was 2 days ago. See, Hindustan Petroleum was just below a major resistance. See what happens. Don't never ever buy below a major resistance. Right? See, price, this is a resistance. Okay, price hit this resistance and it comes down. Again, whenever the price comes up here, okay, if the price comes up here, then again there could be a problem, right? So don't एकदम obvious मत रहो, एकदम ये तो एकदम बिल्कुल obvious resistance है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब भी आप चार्ट खोल के देखोगे तो ये कोई भी AI टूल आपको नहीं दिखाएगा। It cannot. Why? Because I mean AI is built for uh, you know uh, things that are repetitive quite often. But when it comes to isolating, locating the zones, uh, you have to look at the charts. Okay? Right? So putting things in perspective. See, again, HDFC Bank, again a failure. See, now this is coming at a support. Okay. So personally, I go through hundreds of charts every day, and things just come automatically to me because I've been doing it for a long time, and it has taken me a very long time to learn about this concept. But I'm giving you this whatever I have learned over the years in the markets, and I'm just giving it to you that it is possible for you if you observe the market and see. Start with learning very few things. Don't start to learn too many things, and slowly things will get clearer, and and your understanding of the market action will improve. Right, so we can have a question and answer session. Whatever people want to ask, Yeah, I they think Manish, दो uh, क्वेश्चंस था भीमराव और रिंकू का. I think they got answered automatically, right? So how long you have to look recent levels, any specific time the duration? recent Okay. levels. See, ideally, Bhimrao ji, whenever you look at a price chart, let's say daily time frame, you always have roughly 1 years of data. 200 से लेके 250, assuming there are 250 trading days in a year. So ideally, you should be having at least 1 year of data in front of you. If you are looking at weekly, it could be around 3 years. If you are looking at monthly, it could be around 10 to 10 years or more.
Okay, so you have to look at the recent activity, not too old activity. I think anywhere, see price levels that are returning, I would say within 20 days to 3 months, they act as a very important barriers. So बहुत ज्यादा अगर पुराना होता है, then you are not too sure कि ये hold होगा कि नहीं होगा. But as a rule of thumb, I would look at relatively. This is called a concept of recency. कि देखो support resistance का भी इसमें भी और depth है. They have only just scratched the surface. But ideally, anywhere from 1 month to 3 months, and always look at the sharpness of the move. देखो move में कितना, जब भी price नीचे आया था तभी उसमें ताकत कितनी थी. This is what is called as the principle of magnitude. So okay, see. See, let's say for example, on see this was a very sharp move. So here you can expect prices might take a pause. Okay. Now see this move here, it was around 10 to 15%. Okay. Prices bounced off and then they stopped here. Okay. This was a sharp move. Prices then broke below this level and we had a decline. See, यहाँ पर मैं extend करता हूँ, prices just stopped and then there was this breakout. I picked out Hindustan Lever here because there was some sort of a rounding bottom, a trend line breakout. But in this case, it did not stop. Obviously, the developments helped uh, because of whatever happened between India and Pakistan in that time, and there was this sudden interest in defense stocks. This is the reason why it just shot up through the resistance level. But ideally, in such scenarios, अगर prices यहाँ पर आता है, then you will see a prolonged either sideways action or a sharp decline. In this case, क्या हुआ था? इसलिए defense stocks ने वो time पे because of the India Pakistan scenario, a lot of defense stocks shot up. Suddenly, HAL was in the limelight, MK1 and MK2. The deliveries have been preponed and so on and so forth. That is the reason why there was a sharp. Uh, So yeah, Yeah, okay, Manish bhai, I think we'll take a one yeah, question, last question, that is yeah. Sevabrata, from where you may get a good stock list, stock selection. See, एक बार बता दो quickly how to select oh, the. that depends, Subrata ji. What is it that you want? I would say stick with Nifty 50 for your day-to-day analysis. That's a very good starting point. If you cannot do justice to 50 stocks, start with Sensex 30, with all large cap stocks. Focus on those stocks at least for some time, maybe 6 months or maybe uh, 6 months, maybe to 1 year, and then you will slowly start to get hang of. Okay. Yeah, I think Manish, I think very nice session, very practical, in fact, very insightful. Like you have beautifully explained some of the concepts and strategies, and our all the participants have really taken part with lots of questions they have. I'm sure they are clear with the concept and they will be able to use it. So guys, so I think that's all for today. So next session is going to be on 19th, that is next Friday and Saturday. So Friday, we are going to learn about options, how to use these concepts that you have learned today to use in options that we are going to learn. And then on 20th, we are going to discuss about other instruments. So guys, looking forward to see you. Thank you so much, Manish bhai, and thank you Yeah, to the I hope. participants. Yeah, it is Thursday and Friday. It is not Friday and Saturday. So Thursday and Friday. So sorry, 19th and 20th. Okay, guys. So I hope you have enjoyed it and good luck to you. Happy trading Yeah. and see you. Wish you all prosperity in the years to come. Yeah, Bye. one quick comment, just a sec, Manish. Uh, One quick comment. Please feel free to comment. We have got our X space, Twitter space, and LinkedIn or wherever you in the social media. Please feel free to give your learning, comment, and feedback. That would be very useful to us. So with that, I'd like to close the session. Thank you so much. Looking forward to see you in the next session. Thank you so much, guys. Bye bye. bye.